So we actually have to pick up a few more people at another stop on the other side of the town. I'll talk to you guys about what we're doing today, okay? Yeah, cool. Everyone comfortable? Just make sure you guys are also wearing your seat belt as well. Guys, and welcome back to another video. Woohoo! And like always, हर बार की तरह हम लेट थे आज फिर. आज हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड और कहाँ जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं. वो वाला थोड़ी है. अबे वही है. तो हम पहले ऑक्सफोर्ड वाह मेरे साथ धोखा हुआ है. अरे यार सुनो, बहुत बार हो चुका. थक गए भाई, बहुत थक गए. ओ ये कितना सुंदर लग रहा है, देखो. गाइस यहाँ मैं बिल्डिंग के बारे में बात कर रही हूँ, ना कि उस आदमी के. जो भी है क्या है, बस सोसाइटी कहते हैं इसे सारी. अबे ऐसे में चलाएंगे कुछ ना. हाँ तो हम लोग अभी कितने बज रहे हैं? 7:44 हो गया. हम लोग 7 बजे निकले थे घर से. हमें 7:30 पहुँचना था और हर बार की तरह हम लेट थे. हमारी ट्रेन भी लेट थी, ट्यूब मतलब जो थी. अब हम अपने बस में बैठ गए हैं. यहाँ से हम जाएंगे ऑक्सफोर्ड घूमेंगे 2 घंटा. फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे हैरी पॉटर. आज का दिन बहुत मस्त होने वाला है और कल की ब्लॉगिंग से थोड़ी आज मैं बेटर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि कल बहुत बकवास था. ऐसा इसका क्या कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएगी. चलो गाइस, पूरा वैजी होके आई हूँ मैं और मुझे अब गर्मी लग रही है तो थोड़ा एसी वेसी का इंतजाम करते हैं. कूलर लगवा देते हैं. कूलर लगवा देते हैं. वो लाइट ऑफ इंडिया, वो लाइट ऑफ इंडिया फ्लैग नहीं ले जाने की. एक तो मुझे समझ नहीं आता हर जगह इनके यहाँ पे टिंट Back on track now. So this particular area of London is probably a lot of famous people live around here. A flat around here, a very small one, will probably cost you in excess of £1 million. Very, इसका कहने का ये मतलब है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव घर है. very expensive place. There's a Natural History Museum here, the Science Museum, and the Victorian Albert. And what's great about museums in London is most of them are free. Check them out. They're very busy, obviously, because they're free, but they're very interesting as well. So there's an idea if you guys have some spare. तो मोस्ट यूके के म्यूजियम्स फ्री होते हैं. तो मैं ये बोल रही थी, हम इंडियंस को फ्री चीज़ें पसंद है तो जाओ और ज़रूर देखो. बहुत अच्छा है, मैंने सुना है. हिस्ट्री म्यूजियम बहुत अच्छा है. यहाँ पे आपको जैसे घर के तो सामान यहाँ पर वो ब्रिटिश म्यूजियम है. सारे ठीक है, हिस्ट्री म्यूजियम हो गया तो रात में स्लीप ओवर भी होता है, सर्जन डिस्को भी होता है. सब कुछ सारा शोशा सब है, पूरा शोशा है दिल्ली वालों के लिए. तो चलो दिखा देते हैं सुंदर सुंदर सी बिल्डिंग्स. Very famous department store. It used to be owned by Muhammad Al Fayed, the father of Dodi Fayed, the one who passed away with Princess Diana. Also owned Fulham Football Club. If anyone, you could buy. You used to be able to buy like tigers and elephants from there. They wouldn't be inside. They'll just source it from you. So whatever you wanted to buy, they'll get it for you, basically. So, hands up, who's a Harry Potter fan? That's in the right place. Who's not a Harry Potter fan? There's always one. Yeah. You're very brave to put your hand up. Good.
एक लंबी नींद के बाद अब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ गए हैं। So there's three main attractions in this area to watch out for. So if you get lost, look up. So that museum over there is where we're going to pick you up on this side of the road. That's the Ashmolean Museum. Ashmolean. It's very hard to spell. You don't know how to look up English. It's called Ashmolean. It's a very famous museum because it was the first museum in the world. There's a memorial which we're going to talk about very soon. Once we start our walking tour, we get around into town. That's called the Martyrs Memorial, which is even harder to spell if you don't know how to spell English. But that's a very famous memorial that a lot of signs point to. Once again, I'll tell you the story about that. At school, I think my teacher taught me this story. It took about 12 weeks to tell me. I'm going to try to do it in 3 or 4 minutes. I'm going to condense it. We're not going to stand outside. And then there's the Randolph Hotel, which is another landmark. It's one of the most famous hotels in Oxford. It's very expensive to go. Hey guys, you can just come. Try to be on this side because it's like I passed the exam, so I know most of it. So most of you guys have probably heard of Henry VIII. No more talk about जो क्रॉस है ना ये यहाँ लोग जलाते हैं। ये तो गलत है बस बहुत सनिंदनी निंदनी होता है। हर 3-4 साल में ये रूलर बदल देते हैं, फिर जो इनके साथ नहीं बदलता उनको ऐसे क्रॉस प्रोस पे जला देते हैं। बट ठीक है, चलो इनकी मर्जी। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में ये सारी शॉप्स हैं, हैरी पॉटर के लिए यहाँ खरीद सकते हैं। वो किसकी शक्ल बनी हुई है? Bumba 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 bamba bamba. This is the Shaldonian Theatre, and this is where they come to do that matriculation, which I mentioned at the start of the tour, which is their opening ceremony, when they first become part of the university, basically. And also their graduations here as well. यार आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मतलब विरोध नहीं जाता किसी बात का, पर है तो है, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हैरी पॉटर, मतलब दिस इज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हैरी पॉटर से इंस्पिरेशन ली थी, वो नहीं हुआ, शूट नहीं हुआ। कुछ 1-2 स्टेप्स वगैरह शूट हुए जो 4 महीने पहले वो सिर्फ स्टेप्स देखने के लिए आपको बुकिंग करनी पड़ेगी 4 महीने पहले, और पता नहीं कितने पैसे बता रहा था, 4,000 रुपये, पता नहीं कितना 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। This is where Harry Potter idea came. Oxford है, this is Oxford, but it was not shot here because the hall could not fit 4 table rows because 4 houses. Only Guys, could so be this fit. right behind me is called Divinity School, which is important for 2 reasons: one for the university, and one, of course, for Harry Potter. So where they hold classes and exams. But the exams at that time were all oral exams, so they had to speak, talk to their fellows, and it was basically like a debate. And some of these exams sometimes would take up to 3 days to get to pass. I think. So talking about this building is about 700 years old. There they did some Harry Potter scenes. The inside of that building, you can go in. I can show you when we go through. I think it's £2.50 to go in. Just where they filmed the Hogwarts infirmary. To the hospital, the school. Yeah. So remember in the first film when Harry first runs into the guy that can't name, like Voldemort dude. Yeah. And then Yeah. touches the face and then it all goes wrong. That's where the infirmary was, Harry Potter के movie में. And she's doing the potion and she takes her potion and just happens to be like a cat here and there. And she turns into a cat. It's also the same room in the Goblet of Fire
where Professor McGonagall teaches the students how to dance. Remember that? So there's the boys on one side, the girls are on the other side. Ron's like muttering under his breath about something, not really wanting to be there, and McGonagall pulls them up and teaches them how to dance. College, that's good for college, and when all these drama sections. Now that's why I'm famous about that bridge. But we're not actually here for that bridge. We're going to go under the bridge and we're going to talk about Harry Potter. So I was telling you guys something. तो मैंने भूल गई मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था. तो मैं पिछले जो वीडियो में बनाई थी वो जगह है जहाँ पर इन्फॉर्मरी की लेक्चर होगी और वहाँ मतलब मुझे याद है खुद फर्स्ट मूवी के अंदर जो लास्ट का सीन होता है वहाँ पर होता है और काफ़ी इंस्पिरेशन लाइब्रेरी की भी वहीं से ली गई है. The big one on the back. That is a famous tree in the books. Oh, sorry, the books, the movies, and the Goblet of Fire. Do you guys remember when Malfoy is sitting in the tree, kind of making fun of Harry, and then he jumps out of the tree, and then Mad-Eye Moody comes out and zaps him, becomes a ferret? Yeah. That's the tree he was sitting in. Very famous. Do something that he supposedly didn't do. They have any miracles there, so you might not know the two things he did not do that he said he did not do. One was he didn't have relations with a lady in Monica. The second one was I did not inhale, which he apparently didn't smoke something that's green coloured in that pub. And then that lane is very famous because of Bill Clinton allegedly not going to the pub which is inside the lane. We'll talk about it, guys. We'll talk about it soon. सिर्फ हैरी पॉटर के लिए नहीं, ये सब जगहें बहुत वैसे भी कंट्रोवर्सीज का पार्ट है. जैसे बिल क्लिंटन वाली थी उसमें था कि ही वाज नॉट क्या वो बता रहा था बिल क्लिंटन का कि ही वाज नॉट इन रिलेशनशिप विद सम सर्टेन वुमन. विल रिसर्च दिस. हाँ मोनिको एंड लड़की बोला ना उसने. अच्छा लड़की के साथ ही होगा ना जो भी आई डोंट नो मुझे नहीं पता. एंड द सेकंड वन वाज ही डिडंट स्मोक वीड. कोई है जो गांजा फूकता? कोई है आपसे तो खरीदा है मैंने. बट स्मोक वीड the second most largest library in England apparently, and that's King James who re-established the library again after it was burned by King Henry. Why do they always burn it? Student who went on to become a doctor, and he was the doctor for the kings and queens when he was alive. यार एक चीज़ तो बहुत कूल बताई इसने बताया कि यहाँ पर ये लाइब्रेरी जो ये पीछे लाइब्रेरी है ये अंडरग्राउंड है सारी. और इसका ये जो है ये पहले लाइब्रेरी थी बट ये अब रीडिंग रूम बन गया है इस लाइब्रेरी के लिए. और वो अंडरग्राउंड होता है सब कुछ. मतलब यहाँ से ऑर्डर करो कुछ भी कन्वेयर बेल्ट से आएगा, यहाँ रीड करो, कन्वेयर बेल्ट पे रखो, वापस चला जाएगा भाई. ये है चर्च, ये है लाइब्रेरी का रीडिंग रूम और वो है लाइब्रेरी. दिस इज़ द हार्डेस्ट कॉलेज टू गेट इनटू बिकॉज यू हैव टू बी इनवाइटेड to get to even do the interview. Also, interestingly, Hitler never bombed this place. Rumors that he loved it so much that he didn't bomb it. Maybe it's just as simple as that. चले मिटा फैल जाता. देखो यार बहुत सुंदर है ना, पर भूख लग रही है अब हमें बहुत ज़्यादा तरीके से भूख लग रही है. इसे तो ठंड भी लग रही होगी क्योंकि सुनते कहाँ हमारी
नहीं सुनता क्या है? सुनता किसी को नहीं यार, फिर पछताता है। अब पछतावत हो गई जब जैकेट रहेगा इधर। जैकेट तो ऐसे ही मिल गया लेकिन तो एक ही जैकेट है। चलो जो भी है, एक ही जैकेट। मैं कह रही हूँ बहुत भूख लग रही है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत भूख लग रही है। जल्दी से इसको बोलते हैं भाई वो खान दे प्लीज़ खान दे। छोड़ने जा रहे ये टॉलकिन जो ऑथर है ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सबको पता होगा, उसके पॉइंट पे वहाँ लेके जा रहा है कुछ बताने के लिए। क्या बताने के लिए मुझे नहीं पता कि ऑक्सफोर्ड और उसका क्या आइडिया आया था ये होगा बस और क्या होगा। भाई तुझे जा डालना लग रहा है? इसको जा डालना लग रहा है? So just quickly, we'll talk about Tolkien. So he was a student here. If you go up the pole to the third level windows to the right, the singular one, that was his common room or his dorm room when he lived there. He came here as a student and also as a fellow. He taught here, so he wrote most of the books here as well. यार सच बता रही हूँ, हम काम सारे टाइम से कर लेते हैं पर हम हमेशा लेट क्यों जाते हैं? तेरी वजह से। ये क्या बात होती है? अभी क्या? हाँ यहीं से जाना है, रास्ता यहीं से है, पर मैं फिर भी एक बार डाल लेती हूँ गाइस। ओके बाय। So we are done with The Oxford. teachers Now we described go for her the as quite an average studio. student. She wasn't मैं इसके लिए overly सबसे ज़्यादा excited थी। above everyone else when it came to intelligence or anything like that. एक घंटा लगेगा। But she must have done okay because And she was the head girl of her once we're school, there, which I'll show that you particular role was what the usually given studio to is like. So let's go. one of the more popular. And remember, we're going to leave there at 5:30.